Hello dear students and teachers, welcome to my YouTube channel. This is the third program for Informatics Practices class 12th, wherein we are going to draw a bar chart, single bar chart. Let us see the problem. Problem is consider the data given below in the table, create a bar chart depicting the downloads of the apps. ये हमारे कुछ apps हैं, Angry Bird, Teen Titan, and Marvel Comics and all. इनके टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड्स आर रिटन, कितनी बार ये डाउनलोड किए गए हैं. We have to draw a bar chart depicting these total downloads on y-axis and on x-axis the name of the apps. So let us see the chart. Coding. In coding, we are importing matplotlib.pyplot and numpy as np. Although yes, numpy is needed here to find out the index. So in apps, we are maintaining a list of apps in the variable apps. Apps is a list. Angry Bird, Teen Titan, Marvel Comics. ये लाइन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर स्लैश लगाया गया, बैक स्लैश. So this list is completing over here at this square bracket. Then downloads के लिए एक लिस्ट मैंने बना ली है. So as many apps, as many downloads, data has been written. Downloads equal to within in the form of list in the square bracket. That is similar to the list given in the problem. Now here I am taking an index. Index is equal to np dot arange. np numpy का arange फंक्शन, इससे लेंथ ऑफ एप्स निकाली गई. लेंथ ऑफ एप्स का मतलब होता है इसमें कितने डाटा हैं. सपोज देयर आर 12 डाटा. So length of apps is giving 12. np dot arange will create a list in the variable index, जिसमें कि मान लीजिए 12 apps हैं, तो it will create 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to 11. 0 to 11 value will be created in the variable index. Okay. So ये किस लिए किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि 0 से लेकर के 11 तक 12 वैल्यूज के लिए x एक्सिस पर 12 पॉइंट्स बनाएगा और उन 12 पॉइंट्स को हम एसोसिएट कर देंगे एप्स की लिस्ट से. तो ये जो एप्स हैं वो वहां पर 12 के 12 जो पॉइंट्स बनाएगा उस पर वो डिस्प्ले हो जाएंगे. दैट मीन्स इंडेक्स में हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ एप्स के लिए नंबर ऑफ पॉइंट्स बना रहे हैं इन द वेरिएबल इंडेक्स. और इन पॉइंट्स पर क्या डिस्प्ले करना है वो ये मेथड plt.xtics करेगा. क्या करेगा? इंडेक्स पर एप्स लिख देगा. इंडेक्स 0 पर एंग्री बर्ड लिख देगा. इंडेक्स 1 पर टीन टाइटन लिख देगा एंड सो ऑन. एंड रोटेशन ऑफ द टेक्स्ट विल बी 25 डिग्री, जिससे वो ओवरलैप ना करें ये हेडिंग्स एंग्री बर्ड एंड दिस ऑल दीज थिंग्स ऑन द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस. इसलिए यहाँ रोटेशन को 25 डिग्री कर दिया गया है. सो दीज हेडिंग्स विल बी टिल्ट by 25 degrees and they will not overlap to each other, otherwise they will overlap. तो ये xtics फंक्शन इसीलिए होता है कि आपके x एक्सिस पर अगर ये हेडिंग्स बड़ी हैं तो ओवरलैप कर जाएंगी. ऑल्दो मैं इसको plt डॉट बार यहाँ पर इंडेक्स की बजाय एप्स कॉमा डाउनलोड्स भी कर सकता था, लेकिन उस केस में क्या होगा, एप्स जो है उस पर ओवरलैप करेंगे. ओके. सो आई कैन show you this thing also in our program. Suppose I want to show you this thing. ये प्रोग्राम मैंने स्टोर किया है on the location. I am just telling you this is your third program. So let us open it in the IDLE. This is your IDLE and this is the program. Here if I don't want to show this index, let us make it comment. xtics को भी अगर मैं comment बना देता हूँ और in place of index if I write apps, APPS, then what happens?
सो ये कंट्रोल एस किया मैंने और रन किया। सो यू कैन हैव दिस चार्ट, बट व्हाट इज हैपनिंग, ये एक्स का टाइटल नहीं दिख रहा है, एक्स का टाइटल बहुत छोटा है और ये वाई एक्सिस का टाइटल है। यहाँ पर ये सारे जो टाइटल्स हैं एक्स एक्सिस पर, नेम ऑफ द एप्स हैं, वो ओवरलैप कर रहे हैं। सो इस ओवरलैप से बचने के लिए मैंने क्या किया है, दूसरा मेथड अडॉप्ट किया है। कौन सा मेथड, यू कैन सी हेयर, अगर मैं इसको इंडेक्स को एज इट इज कर देता हूं, पीएलटी ये कमेंट लाइन हटा दिया जाए, इन प्लेस ऑफ इंडेक्स यहाँ पर एप्स हो गया रोटेशन में, और हेयर आई एम राइटिंग इंडेक्स। ओके, सो डाउनलोड्स की लिस्ट बन गई, इंडेक्स में np डॉट अरेंज लेन ऑफ एप्स, इट विल क्रिएट नंबर फ्रॉम 0 to, सपोज देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एप्स हैं, तो ये आपका लेन 9 होगा और ये वैल्यूज जो जनरेट होंगी np डॉट अरेंज से 0 to 8 जनरेट हो जाएंगी। 0 से लेकर के 8 पॉइंट बन जाएंगे ऑन द एक्स एक्सिस टू रिप्रेजेंट द डाउनलोड्स, और दे दोज इंडेक्सेस 0 to 8 विल बी कनेक्टेड विद एप्स। उन पॉइंट्स पर ये एप्स डिस्प्ले होंगे एट ए रोटेशन एंगल ऑफ 25। Those headings will be rotated at 25-degree angle so that it should not overlap। यहाँ पर बार ड्रॉ करने के लिए आप plt डॉट बार का यूज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर डाउनलोड शो कर रहे हैं, कलर क्या है, ग्रीन है। देन plt डॉट एक्स लेवल एज इट इज, ये एक्स लेवल और वाई लेवल बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप पीछे कर रहे थे लाइन चार्ट में। plt डॉट टाइटल भी उसी तरह से है, plt डॉट ग्रिड एंड plt डॉट शो। आई एम नॉट शोइंग द लेजेंड बिकॉज देयर इज ओनली वन बार टू बी डिस्प्ले। मल्टीपल बार डिस्प्ले होते हैं तो आपको लेजेंड शो करने की जरूरत होती है। सो लेट अस सी द आउटपुट हेयर ओनली। इसको मैंने सेव किया और रन कराया, देन यू कैन सी द आउटपुट एंड हाउ इट इज बीइंग डिस्प्लेड। आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्स एक्सिस का टाइटल था, सी ऑल दिस एक्स एक्सिस पर जो भी आप शो कर रहे हैं नेम ऑफ these apps, they are being displayed at 25 degrees angle, tilde at 25 degrees angle, this is y axis title। so ये इस तरह से, उससे बचने के लिए मैं xtix यूज कर रहा था फंक्शन, किससे बचने के लिए, जिससे कि ये नेम ऑफ ऐप शुड नॉट ओवरलैप टू ईच अदर। फाइन, so let us close it and go to our video। So this is all code that I have made you understand there also in the Python, and this is the output as you have seen the output। ये सारा आउटपुट आपको उसी तरह से दिख रहा है as it was being shown in the Python ideally। So that's it about this video। Thank you very much, and please like, share and subscribe this video and channel with your friends also। Thank you very much।